students, today we will start with the part number 2, that is control and coordination, chapter number 7 for class 10. And in part number 2 we will discuss the various aspects or the topics to be covered in this part number 2 are mechanism of the reflex action, brain, EEG, spinal cord, control and coordination in plants, photoperiodism and hormones in humans. So lastly we will discuss with you that is the reflex action, and today we will start with the mechanism of reflex action. So what do you mean by the mechanism of reflex action? Suppose करो आपका हैंड है, that means आपने उस हैंड से किसी एक गर्म चीज को टच कर लिया, that means this should be generate the thermoreceptors. वहां पर thermoreceptors जो होंगे वो generate हो जाएंगे. Thermoreceptors means हीट, जिससे कि आपको इस चीज का एहसास होगा कि वो चीज गर्म है या ठंडी है. सपोज यू टच एन हॉट सब्सटेंस, सपोज आपने एक हॉट सब्सटेंस को, किसी गर्म चीज को जो वो आपने टच किया है, देन थर्मोरिसेप्टर्स ऑफ आवर हैंड गेट्स एक्टिवेटेड. जैसे ही हम किसी गर्म चीज को छुएंगे, दैट मीन्स जो थर्मोरिसेप्टर्स होंगे हमारे हैंड के, वो एकदम से क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड दे जनरेट एन इम्पल्स टू CNS. तो वो एकदम से जो होगा वो क्या करेंगे, वो एक इम्पल्स जनरेट करेंगे. इम्पल्स मीन्स एक मैसेज जनरेट करेंगे, और वो मैसेज जो होगा, वो इम्पल्स जो होगा वो कहां जनरेट होगा, टू CNS. CNS मीन्स सेरेब्रो सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो वो जो एकदम से मैसेज जो होगा वो कहां जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा. और किसके थ्रू जाएगा, सेंसरी नर्व्स के थ्रू मैसेज जो होगा वो एकदम से कहां चला जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. एंड एज ऑल यू नो दैट स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज ब्रेन, दीज आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. उसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, जैसे ही हमने किसी गर्म चीज को छुआ तो वैसे ही हमारे जो सेंसरी नर्व्स होंगे वो क्या करेंगे, एकदम से इम्पल्स जो है या मैसेज जो है वो कंडक्ट करेंगे या कन्वे करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. और उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जैसे ही वो मैसेज पहुंचेगा या इम्पल्स पहुंचेगा, आफ्टर दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनालाइजेस. उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा वो एनालाइज करेगा एंड इंटरप्ट्स करेगा इट्स रिस्पॉन्स. तो जैसे ही सेंसरी नर्व से मैसेज जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पहुंचा, तो वैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा वो एकदम से एनालाइज करेगा और इंटरप्ट करेगा किस चीज को, रिस्पॉन्स को, टू इफेक्ट और ऑर्गन्स. मतलब जिससे कि उसको ये लगा कि जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं. और वो मैसेज किसके थ्रू जाएगा, बाय मोटर नर्व्स. वो मैसेज किसके थ्रू पहुंचेगा, मोटर नर्व्स के थ्रू पहुंचेगा, दैट इज द मोटर नर्व्स. इन दिस केस, अब इस केस में क्या होगा, इफेक्ट और ऑर्गन इज मसल्स. तो यहां पर हमारे सबसे पहले जो ऑर्गन्स जो होंगे जो एकदम से इफेक्ट करेंगे वो कौन से हमारे होंगे, वो इफेक्टर्स होंगे. और हमारी बॉडी में जो हमारी विल के अकॉर्डिंग जो वर्क करते हैं, दैट इज द मसल्स. वो हमारी विल के अकॉर्डिंग जो वर्क करने वाले हैं, दैट आर द मसल्स. तो मसल्स के थ्रू जो मैसेज होगा वो एकदम से पहुंचेगा ऑफ अवर हैंड. तो सो इट कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंड इज विथड्रॉन. तो एकदम से वो क्या होगा, अपने हैंड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वहां से एकदम से अपने हाथ को हटा लेगा. दैट मीन्स दिस इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. आफ्टर रिफ्लेक्स एक्शन, the total patch covered in reflex action is the reflex arc. जो भी हमने जितना पाथ कवर किया थ्रू द रिफ्लेक्स एक्शन, और उस पाथ को जब हम कवर कर लेते हैं तो कवर करने के बाद हम उस चीज को नाम देते हैं, दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क. एंड देयर इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, दैट देयर इज द सेंसरी न्यूरॉन्स, एंड सेंसरी न्यूरॉन्स they have to convey the message to the spinal cord, and spinal cord, they are also known as the relay neurons. And after the spinal cord or the relay neurons, they have to convey the message to the motor neurons,
and motor neurons through effector muscles, and after the effector muscles they have to convey the message through the stimulus, and stimulus again go back to the sensory neuron. So this is the path covered by the reflex arc. तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि what do you mean by reflex arc? That means the answer is given in the systematic manner and you have to be given the answer in the graphically representation. So this is the reflex arc. After the reflex arc, the main controlling system in our body is the brain. All the activities, all the organs to be controlled by the brain in our body. So brain is the main controlling part of the human system. Brain, it is the main controlling center of our body. ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का मेन कंट्रोलिंग पार्ट है. हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी हम गतिविधियां कर रहे हैं, हमें वो काम करना चाहिए या नहीं, वो काम हम सही कर रहे हैं या नहीं, या वो वर्क जो हम कर रहे हैं दैट इज राइट और रॉन्ग, वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है. दैट मीन्स ऑल दीज आर टू बी कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज द मेन कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, and brain is the major part of the central nervous. I am already discussed with you that spinal cord as well as brain, they are the main parts of the central nervous system and it is present in the cavity. और ये brain जो है वो हमारा कहाँ present है? एक cavity में present है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? skull बोलते हैं. And this skull is surrounded by a bony box. ये कि बोन के बॉक्स के साथ कवर्ड है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम. एंड इट इज कवर्ड विद मेम्ब्रेन्स. उसके बाद ये मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस. एंड द फ्लूइड प्रेजेंट इन द वेकेंट स्पेसेस, जो भी हमारे ब्रेन में वेकेंट स्पेस रह जाती है कुछ है, एंड इन दैट वेकेंट स्पेस द फ्लूइड इज प्रेजेंट between the membranes and that is called as the CSF. CSF means cerebrospinal fluid. अगर हम इसको diagrammatically देखते हैं, suppose this is your brain and this is the brain is covered by a bony box. किससे covered है ये? Bony box से covered है, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? Cranium. And it is covered with the membranes. इसके बाद ये membranes के साथ covered है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? Meninges. These membranes are called as the meninges. And the vacant space, जहां पर भी ये vacant space रह जाता है, that vacant space is filled with the fluid. This vacant space is filled with the fluid, and that fluid is known as the cerebrospinal fluid, CSF. That is spinal fluid. Cerebrospinal fluid. अब ये cerebrospinal fluid जो है, it work as a cushion. ये cerebrospinal fluid जो होता है, it works like a cushion. ये cushion की तरह काम करता है. That means this cerebrospinal fluid protects the delicate or the internal parts of the brain. ये ब्रेन के जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं या डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, उनको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इंजरी, हेड इंजरी. कोई भी हमें हेड इंजरी होती है या सिर में चोट लग जाती है, दैट मीन्स दिस cerebrospinal fluid behave like a cushion and protects the internal parts of the brain. And mainly the brain is divided into three parts. ब्रेन के थ्री पार्ट्स है: मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, mid brain, hind brain, and these are the main parts of the brain. So there are three parts of the brains, that is forebrain, midbrain and the hindbrain. Further, these forebrain, midbrain and hindbrain, they have further divided into subparts, various subparts. First is the forebrain. Forebrain is divided into cerebrum and olfactory lobes. So forebrain has
मेन टू पार्ट्स, दैट इज द सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स. इसको हम डायग्रामेटिकली ब्रेन के डायग्राम में देखेंगे. तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सबसे बड़ा पार्ट जो है हमारे ब्रेन का, दैट इज द सेरिब्रम, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स. ठीक है, ये वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज द लोब्स. सो वेरियस पार्ट्स of the lobes, they are to be present in the cerebrum. Suppose सबसे पहले हमारा लोब जो है, that is the occipital lobe जो है, that is helping muscular facial activities. Temporal lobe है, that is helps in hearing. Occipital helps in vision, and parietal lobes, and that means they produce the sensations such as taste, touch, and temperature. And the last is the olfactory lobe. It also produces the sensations like the taste, etc. So it is all about the forebrain. तो forebrain में अगर हम diagrammatically देखते हैं तो this is the brain, and there are various lobes, and these lobes have various compartments. Second is the midbrain. Second part of the brain is the midbrain. Midbrain has no subdivisions. Midbrain की कोई भी subdivisions नहीं है. That means it is totally free from the divisions, but it mainly controls the reflex actions. ये कुछ reflex actions को control करता है, and it also produce some pituitary glands. But pituitary gland जो होगा वो हम आगे पढ़ेंगे. That means the main role of the midbrain is to control the reflex action as well as produce some pituitary glands. And the last part of the brain is the hindbrain. So hindbrain जो है, it has mainly three parts. That is the cerebellum, pons varolii, and medulla oblongata. These are the three parts of the hindbrain. Cerebellum is also just like cerebrum, but it is not as too large as the cerebrum. So we can say that it is the second largest part of the brain. Pons varolii, जो pons varolii, second part is the pons varolii. It helps in some respiratory aspects. Pons varolii का जो काम है, that means it helps in some respiratory aspects. And the last is the medulla oblongata. It is also known as the stem of the brain. इसको हम stem of the brain भी कहते हैं, and it helps, it produce the some aspects such as coughing, sneezing, and heartbeat. So these are the mainly three parts of the brain, that is forebrain, midbrain, and hindbrain. And further these parts have divided into subparts, and subparts में भी हमने different parts पढ़ लिए हैं कि जो forebrain है उसके मेन पार्ट्स कौन से हैं, दैट इज द सेरिब्रम एंड द ऑल्फैक्टरी लोब. मिड ब्रेन जो है, इट हैज नो एनी सब डिविजन्स, whereas the hindbrain, it has been divided into three subparts, that is the cerebellum, pons varolii, as well as medulla oblongata. So this is all about the brain. Next is the EEG. Same as like that the ECG. Same as that like the ECG, that is electrocardiogram. तो ECG का जो रोल होता है, that is for the heart related, whereas EEG, it is the instrument that helps in recording electric signals generated in brain. EEG का जो काम है, that means ये एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी किस चीज में हेल्प करता है, रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है जो कि कहां से जनरेट होते हैं, ब्रेन से जनरेट होते हैं. एंड इन दिस द इलेक्ट्रोड्स विद वैक्यूम पैड्स. तो इसका डायग्राम इस तरह से, दिस इज जस्ट लाइक द इंस्ट्रूमेंट एंड इट हैज द वेरियस वैक्यूम पैड्स. इसमें वेरियस वैक्यूम पैड्स होते हैं, दे आर अटैच्ड टू द स्कैल्प. जो किसके साथ अटैच होते हैं, ह्यूमन स्कैल्प के साथ अटैच होते हैं of brain, and patient is said to relax. And at that time हम patient को क्या कहेंगे कि that is patient is to be relaxed. This machine records the electric signals. ये मशीन जो होती है वो क्या करती है, स्कैल्प के साथ लगाते हैं इसको जैसे ही हम, तो वो एकदम से जो ब्रेन के जो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं उनको क्या करती है, ये रिकॉर्ड करती है, एंड इज प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. और वो जो उसका प्रिंट आउट निकलता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ
graph and this graph consists of different types of waves. और ये जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ में different types of waves होते हैं. mainly 4 types के जो waves होते हैं. कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड थीटा. These are the 4 types of the waves that are produced in the form of graph. And the graph is called as electroencephalogram. और इस ग्राफ को हम क्या नाम देते हैं? Electroencephalogram. So the full form of the EEG is the electroencephalogram. So this is the all about the brain. And the second main important part of the central nervous system after the brain is the spinal cord. We are already saying that the main parts of the central nervous system is the brain and the spinal cord. So after the completion of the brain, we shift to the spinal cord. It is the extension of the medulla oblongata. ये किस चीज का extension है? Medulla oblongata का. And the point from where it leads into स्पाइनल कॉर्ड. और ऐसा पॉइंट जहां पर ये लीड करती है किस चीज में? स्पाइनल कॉर्ड में लीड करती है. दैट इज नोन एज द फोरामन मैग्नम. उसको हम क्या कहते हैं? फोरामन मैग्नम. एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स. स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स एंड देयर आर 32 पेयर्स ऑफ नर्व्स. और स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो कितने पेयर्स ऑफ नर्व्स है? 32 पेयर्स ऑफ नर्व्स है that are arising or terminating into spinal cord. जो spinal cord से arise भी होते हैं और terminate भी होते हैं. That means there are 32 pairs of nerves that are arising or terminating into the spinal cord. And spinal cord has also fluid just like same as that of the brain. तो जो ब्रेन में हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज द CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो स्पाइनल कॉर्ड में भी जो है वो सेम फ्लूइड प्रेजेंट होगा दैट इज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. एंड इन इट फ्रॉम आउटसाइड इट इज एनक्लोज्ड बाय द बैकबोन. और अगर ये बाहर अगर इसको हम एनक्लोज करते हैं आउटसाइड दैट इज इट इज एनक्लोज्ड, दैट फ्लूइड इज एनक्लोज्ड बाय द बैकबोन. सो वी हैव टू बी close the control and coordination in animals, and after the completion of control and coordination in animals we shift to the control and coordination in plants. तो जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स में होता है तो जस्ट सेम लाइक हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो किसमें होता है? प्लांट्स में भी होता है. तो जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा एनिमल्स के केस में एडवांस है उस तरह से प्लांट्स के केस में एडवांस तो नहीं है, पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है that is very important just like humans as well as animals. So in the case of plants control and coordination is also very important, and control and coordination plays a very important role for the proper functioning of the plants. So कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो हमारा मेन हमारे जो एनिमल्स के केस में था वहां पर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था वहां पर दैट मीन्स द ब्रेन इज द मेजर पार्ट फॉर कंट्रोलिंग द एवरीथिंग. बट इन केस ऑफ प्लांट्स तो वहां पर हमारा जो है दैट इज द हार्मोन्स. हार्मोन्स जो होते हैं दे हैव टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो सबसे पहले हमारे आते हैं फाइटो हार्मोन्स. The hormones present in plants. ऐसे हार्मोन्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स. So various types of the phytohormones are there. Auxin, it is present on the tip of the plant. Auxin hormone जो है वो कहाँ present है? It is present on the tip of the plant and it helps in the growth of the plant. और auxin hormone एक ऐसा हार्मोन है जो किस चीज में हेल्प करता है? For the growth of the plant. प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है. Such as cell multiplication, सेल की मल्टीप्लिकेशन कैसे होनी है, सेल एनलार्जमेंट, सेल एनलार्ज कैसे होगा, एंड आफ्टर दैट द मैच्योरेशन ऑफ द सेल, सेल जो है वो मैच्योर होकर क्या करेगा, ये सेल मैच्योर कैसे होगा, एंड आफ्टर दैट ब्रेक द सीड डोर्मेंसी, उसके बाद वो क्या करता है, सीड डोर्मेंसी ब्रेक करता है. जैसे कि सारे के सारे प्लांट्स हमारे जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं वो प्लांट से ही बन जाते हैं, तो उसमें से कुछ सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डोर्मेंट हो जाते हैं. दैट मीन्स इस हार्मोन की जो कोशिश होती है वो ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा सीड्स को डोर्मेंट करके उनको प्लांट्स में कन्वर्ट किया जा सके. आफ्टर द नेक्स्ट हार्मोन इज द जिब्रेलिन. जिब्रेलिन हार्मोन जो है इट इज ऑल्सो ग्रोथ हार्मोन. जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है
जो कि किस चीज में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है. सो इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रोथ हार्मोन एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. और ये किस चीज की ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है एज इट इंक्रीजेस द हाइट ऑफ द प्लांट. ये और किस चीज की हाइट को इंक्रीज करता है, ये प्लांट की. सपोज ये जिब्रेलिन हार्मोन जो है, अगर हम आर्टिफिशियली इस हार्मोन को जो है वो प्लांट्स के ऊपर इसको यूज करें, तो जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, आफ्टर द यूज ऑफ दिस हार्मोन्स ऑटोमेटिकली देयर इज एन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट्स. सच एज अगर आप गोभी का प्लांट देखें तो उसमें जो उसकी हाइट जो होती है वो ज्यादा नहीं होती है, पर अगर हम जिब्रेलिन हार्मोन यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी कैन इंक्रीज द हाइट ऑफ दैट वेजिटेबल. After that, ethylene, it helps in ripening of fruits and vegetables. जो इथाइलिन है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पकाने के काम आता है. नेक्स्ट साइटोकाइनिन, इट हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो किस चीज में हेल्प करता है, फॉर द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. वी ऑलरेडी डिस्कस देयर इज ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एज वेल एज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. तो ये जो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है दैट मीन्स ये कहां पर यूजफुल है, जैसे जीरोफाइट्स प्लांट है, जीरोफाइट प्लांट्स. तो जीरोफाइट्स प्लांट्स कहां पर होते हैं, सच एज ये डेजर्ट्स वगैरह में, रेगिस्तान वगैरह में होते हैं जहां पर पानी की क्या होती है, कमी होती है. तो वहां पर ये हार्मोन जो है साइटोकाइनिन का, दैट मींस इन दैट एरियाज दिस हार्मोन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स. क्योंकि अगर वो स्टोमेटा जो होगा वो ओपन रहेगा, दैट मींस देयर इज द लॉस ऑफ मैक्सिमम वाटर. तो वहां से पानी जो होगा वो मैक्सिमम लॉस होगा. अगर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वहां पर साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो हेल्प करता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, तो उन प्लांट्स के लिए जो है वो हार्मोन जो है वो बहुत यूजफुल है, क्योंकि वहां पर ट्रांसपायरेशन का ज्यादा लॉस नहीं होगा. So breaks acid dormancy and it also helps in the breaking of the C dormancy. Next is the abscisic acid. It is also known as ABA. That is the abscisic acid. It is a negative hormone. Abscisic acid जो है ये क्या है, नेगेटिव हार्मोन है. इसके ऊपर हमने जितने भी पढ़े वो सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव हार्मोन से. दैट मीन्स दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. वो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे. सो that's why we can say that these are the positive hormones, but abscisic acid is the only hormone is that where it is a negative hormone, जहां पर ये negative hormone है, and it retards growth of plants. ये plants की growth को क्या करता है, retard करता है. that means ये plants की growth को कम करता है, and it promotes senescence and it causes premature falling of fruits and vegetables. ये जो प्रीमेच्योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो कि अभी तक पूरी तरह से वो पके नहीं होते हैं, मेच्योर नहीं होते हैं, तो उससे पहले वो उनको क्या कर देता है, नीचे गिरा देता है, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट, आफ्टर द फाइटोहार्मोन्स देयर आर द ट्रॉपिक मूवमेंट्स. प्लांट्स के लिए कुछ मूवमेंट्स जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, एंड दीज मूवमेंट्स आर नोन एज द ट्रॉपिक मूवमेंट्स. द मूवमेंट्स कॉज्ड इन प्लांट्स, ऐसी मूवमेंट्स जो कहां पर कॉज होती है, प्लांट्स में कॉज होती है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. जैसे ही उस प्लांट्स को कोई स्टिमुलस मिलता है, द वेरियस मूवमेंट्स दैट आर कॉज्ड इन द प्लांट्स दैट आर इन रिस्पॉन्स टू लाइट, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी एंड इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स. So after phototropism, the next is the geotropism. The movement caused in plants in response to gravity. ऐसे response जो कि plants में होते हैं, पर वो होते हैं due to the gravity, and that tropism is known as the geotropism. Next, chemotropism, the movement caused in plants in response to chemicals. ऐसे movements जो plants में होते हैं, पर वो होते हैं due to the response in chemicals, and that tropism is known as the chemotropism. For example, अगर आप देखते हैं कि ये हमारा प्लांट है, this is the plant and the plant is put in the pot. तो हम ये देखेंगे कि जैसे ही उसके ऊपर जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी मतलब रूट्स जो होंगी उसकी वो डाउनवर्ड जाएंगी, वो नीचे की तरफ को रहेंगी, जबकि प्लांट जो है जैसे उसको सन की रेज गिरेंगी, दैट मीन्स इट बेंड टुवर्ड्स द लाइट. तो लाइट की तरफ को क्या करेगा, बेंड करेगा. दैट इज नोन एज द जियोट्रोपिज्म. अगर हम कीमोट्रोपिज्म देखते हैं तो कीमोट्रोपिज्म में क्या है, द मूवमेंट कॉज्ड इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल. तो इसमें हमारी जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलन ट्यूब. जैसे ही पॉलन ट्यूब जो है वो मैच्योर होती है, दैट मीन्स इट शिफ्ट टुवर्ड्स द एम्ब्रॉय सैक
एंड इट एंटर्स टू द एम्ब्रॉय सेक थ्रू द माइक्रोपाइल। तो वो माइक्रोपाइल से होती हुई क्या करती है, वो एंटर करता है, पॉलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल से होते हुए एम्ब्रॉय सैक जो है वो वहां पर एंटर करता है। तो दैट इज इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। तो वो प्लांट्स की जो मूवमेंट हो रही है, जर्मिनेशन जो हो रही है पॉलन ट्यूब की, दैट इज इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल्स। आफ्टर दैट देयर आर सम नास्टिक मूवमेंट्स। कुछ नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स है, दीज आर द मूवमेंट्स दैट अकर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ये वो मूवमेंट्स हैं जो कि अकर करती हैं ड्यू टू द in response to the direction of the stimulus। स्टिमुलस की डायरेक्शन जिस तरफ को होगी उस तरफ को इन मूवमेंट्स जो होती है वो क्या करती है, डाइवर्ट कर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज सीन द टच मी नॉट प्लांट। अगर हम इसमें कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज टच मी नॉट। तो टच मी नॉट जो प्लांट है वो किस तरह से होता है, ये है जैसे दिस इज टच मी नॉट प्लांट। This is the touch me not plant and the botanical name of the touch me not is Mimosa pudica। ठीक है, this is the botanical name of touch me not। तो जैसे ही स्टिमुलस जो होगा इसको रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसे इसको टच करेंगे, दैट मीन्स द प्लांट द लीव्स दे आर टू बी क्लोज्ड। वो क्या हो जाएंगी, लीव्स क्लोज्ड हो जाएंगी। द लीव्स आर टू बी क्लोज्ड। Such type of the movements are known as the nastic movements। ऐसे movements को हम क्या कहते हैं, nastic movements। That is in case the plants they have to be bent towards the direction of the stimulus। जिस तरफ से उसको stimulus का response मिलेगा उसी तरफ को जो है वो divert कर जाता है। And such type of the movements are known as the nastic movements। The stimulus for it is touch। और इस प्लांट में जो स्टिमुलस है that is the touch। जैसे इस प्लांट को टच करेंगे that means the leaves are totally closed। leaves जो भी वो close कर जाएंगी। when touch leaf closes। जैसे हम इसको छुएंगे leaves are to be closed। such type of the movements are known as the nastic movements। After that there is the photoperiodism। the next concept of this chapter is the photoperiodism। it is the period of light to which plant is exposed to sunlight। ये वो पीरियड है लाइट का जिसमें कि प्लांट जो होता है वो एक्सपोज्ड होता है towards the direction of the light। Actually there is a blue green pigment। actually इन plants में जो होता है वो कौन सा पिगमेंट होता है, blue green pigment होता है, जिस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, phytochrome। and that pigment that is phytochrome, that pigment is in response to the light। यही पिगमेंट जो होता है वो किस रिस्पॉन्स में होता है, लाइट के रिस्पॉन्स के लिए होता है। some plants need more light। अब इस तरह से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको जो है ज्यादा जरूरत होती है लाइट की, कुछ जो होते हैं जिनको कम जरूरत होती है लाइट की, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मॉडरेट लाइट की जरूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कम लाइट की जरूरत होती है। तो दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स दैट आर नोन एज शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड द डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो जैसे शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे तो उनको क्या है, शॉर्ट डे प्लांट्स में उनको लाइट की जो जरूरत होगी वो कम होगी। लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे दैट मीन्स दे नीड मोर लाइट फॉर देयर ग्रोथ। एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स होंगे दैट मीन्स दे नीड इन इक्वल अमाउंट ऑफ द लाइट एज वेल एज डार्कनेस। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द प्लांट्स दैट कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द लाइट। नेक्स्ट इज द hormonal system and there is a completion of the control and coordination in plants, and after that we shift to the next topic that is the hormonal system। first is the hormones in humans। humans body जो है वो various types के hormones को मिलकर बनी हुई है। that means there are number of hormones in our body and same as in case of the plants that they have the hormones, they are responsible for the growth of the plants। Same as in case of the humans, the hormones are responsible for the human's growth। Hormones are the certain chemicals released in our bodies। Hormones जो हैं वो एक तरह के chemicals हैं जो कि released होते हैं किसमें, human bodies में, and help in control and coordination। और ये भी किस चीज में help करते हैं, control and coordination में। That means
the hormones, they are such type of the chemicals that are released in the human bodies and they're responsible for the control and coordination. हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हार्मोन्स जो है बॉडीज में वो किसके द्वारा सिक्रीट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं. अगर हम सिर्फ ग्लैंड्स की बात करते हैं तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. दैट मींस these glands are made up of various types of the cells that are in our body, and these cells जो होते हैं ये क्या करते हैं? That means they help in the secretion, जो कि हमने digestive system में या digestion में पढ़ा था कि various types of the cells that are various types of the glands. Glands are actually the group of cells and they help in the secretion of the various enzymes in our body. Actually, there are two types of the glands in our body. तो हमारे पास mainly two types के glands हैं, that are the exocrine glands and the endocrine glands. Endocrine glands अभी हम लोग already पढ़ चुके हैं कि endocrine glands are secreted in our body. तो ये हमारी body में secrete होते हैं और various types के endocrine glands हैं जो human bodies में produce होते हैं. कौन कौन से हैं? Pituitary gland है, thyroid gland है, thymus है, pancreas है, and ovary and testes, and these are the various types of the glands that are secreted in our body, and these glands are categorized in the endocrine glands. पर अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है कि फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके लिए क्या है कि हमें you have to be know about the difference between the exocrine glands and the endocrine glands. Exocrine glands होते हैं they are with ducts, and exocrine glands होते हैं वो डक्ट के साथ होते हैं, whereas endocrine glands are without duct, उनमें duct नहीं होता है. And in exocrine glands में जो है that means they have to be secrete, they have to be via exocrine glands, that means they are with ducts, whereas endocrine glands they are without ducts. So this is the difference between the exocrine glands and the endocrine glands. So you know very well that there are two types of the glands in our body, that are exocrine glands and endocrine glands. And various types of the endocrine glands that are present in our body are thyroid gland, thymus, pancreas, testes, ovaries. All these glands are present in our body. अब हमें endocrine glands की पोजीशन का पता है कि वो हमारी बॉडी में ही सिक्रीट होते हैं, पर हमें एक्सोक्राइन ग्लैंड का पता नहीं है. So from this question we have to know about the difference between the exocrine glands and endocrine glands. Exocrine glands they have the ducts, whereas endocrine glands they have without ducts. Exocrine glands they secrete enzymes, जो कि हमने पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हुआ है कि जो मेन रोल है exocrine glands का, they have to play an important role in the digestion. Whereas endocrine glands they secrete the hormones. अभी हमने कहा कि various types of the glands they have to be secreted in our body, and the exocrine glands they have to be reach the target via duct. वो duct से होते हुए वो अपने target को reach करते हैं. Whereas in endocrine gland they reach the target organs via blood. वो blood से होते हुए अपने target को reach करते हैं. And the common example of the exocrine gland is liver, whereas the common example of the endocrine gland is the thyroid gland. After that, the study of the endocrine glands and their secretion is called endocrinology. जो study है हमारी endocrine glands की या फिर उनकी जो secretion है हमारी body में वो क्या कहलाती है? Endocrinology. Next, what are the various characteristics of the hormones? The hormones they are secreted in very small amount. ये काफी small amount में secrete होते हैं body में, and they are secreted by the endocrine glands. And these hormones they have to be secreted in our body with the help of the endocrine glands, and they act only upon the target organs. और ये जो hormones होते हैं, that means they have to be act only on the target organs. And they reach the target organs. अभी मैंने पीछे बताया कि जो endocrine glands हैं they reach the target organs via blood. वो blood से होते हुए वो अपने target organs को reach करते हैं.
And after that, there are various types of the endocrine glands that are secreted in our body. So first of all, we will take the Pituitary gland. It is located in the midbrain. Pituitary gland, इसकी जो location है, that is in the midbrain, and it is also called as master gland of our body. इसको हम master gland भी बोलते हैं अपनी body में. क्यों बोलते हैं? As it secretes some important hormones. क्योंकि ये जो pituitary gland है, it secretes some important hormones in our body, and the functioning of it is controlled by a part. और जितनी भी functioning है हमारे pituitary glands की, that is secreted, that is controlled by the special type of the part of the brain, and that part of the brain is known as the hypothalamus. तो यहाँ पर हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो हम कह रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मेन पार्ट है मिड ब्रेन का, और इसको हम मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी भी बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी में सिक्रीट करता है, और इन ग्लैंड्स की जो फंक्शनिंग है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमस. और वो फंक्शन, अब ये हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है, ये मतलब कुछ अपने ऐसे मैसेजेस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक जो है वो कन्वे करता है थ्रू द, वो कौन हार्मोन्स के थ्रू उन मैसेजेस को डिलीवर करता है, एंड दैट हार्मोन्स आर नोन एज द रिलीजिंग हार्मोन्स. और वो रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो अपना जो मैसेज जो है वो डिलीवर करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स तक कि आइदर उन्हें वो एंजाइम्स जो हैं वो या वो हार्मोन्स जो हैं वो उन्हें सिक्रीट करने हैं या नहीं करने हैं, और साथ ही वो इनहिबिटरी हार्मोन्स को भी रिलीज करता है. अगर वो नहीं चाहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन्स को सिक्रीट करे तो उस टाइम जो होते हैं वो इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं, दैट मींस दे कन्वे द मैसेज to the pituitary glands to stop the formation of the hormones. So on the behalf of this reason, it is known as hypothalamus is known as the major part of the body as well as major part of the brain. After that, the various types of the pituitary glands are there. The first type of the pituitary gland is the growth hormones, and growth hormones it helps in the growth of the body. ये किस चीज में हेल्प करता है? बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है. एंड इफ दिस हार्मोन इज रिलीज्ड इन एक्सेस, अगर ये हार्मोन हमारा ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में रिलीज हो जाता है, दैट मीन्स इट कॉजेज द डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज नोन एज द डिजेनेटिज्म. दैट मीन्स एक्सेस में ग्रोथ का होना या जरूरत से ज्यादा ग्रोथ होना, that means it causes the disease that is known as the degeneratism. And if it is secreted in less amount, अगर वो less amount में secrete होता है, that means it causes the disease that is the dwarfism. क्योंकि कई आदमी जो बोने रह जाते हैं, that means there is no proper growth of the hormones in the body. On the behalf of that reason, there is a disease that is known as the dwarfism. तो जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स का बॉडी में सिक्रीट होना या जरूरत से कम हार्मोन्स का सिक्रीट होना जो है, अल्टीमेटली इट लीड्स नंबर ऑफ डिजीजेस, इट कॉजेज अ नंबर ऑफ डिजीजेस इन द ह्यूमन बॉडी. आफ्टर दैट, द थर्ड टाइप ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन्स. प्रोलैक्टिन मीन्स लैक्टिन से पहले का पीरियड या मिल्क से पहले का जो पीरियड है, दैट इज द प्रोलैक्टिन. Helps in the development of the mammary glands. किस चीज में हेल्प करता है? In the development of the mammary glands, and these mammary glands specially produced in the females. And the third type of the pituitary gland is the oxytocin, and it is also known as the birth hormone. And this hormone helps in the secretion of milk through these mammary glands. और जो milk की जो formation होती है वो किस की हेल्प से होती है? Through these mammary glands. Next is the ADH, that is helps in osmoregulation. ये किस चीज में हेल्प करता है? osmoregulation में. और इसका दूसरा नाम जो है इसको हम vasopressin भी कहते हैं. It is also known as vasopressin. And this hormone maintains the water and the iron level in the body. The next type of the pituitary gland is the tropic hormone, and this hormone look after the secretion from the other glands. ये दूसरे glands के secretion को क्या करता है? Look after करता है, such as thyroid gland, thymus,
pancreas, pituitary thymus, testes, ovaries, ये उनकी functioning जो है, that means the functioning of these glands in our body is in a well systematic manner or not. That means the main work of this gland is to watch out the work of these glands either in a well systematic manner or not. Next, the second type of the endocrine glands after the pituitary gland is the thyroid gland. And the thyroid gland, it is a bilobed gland located in neck. ये कहाँ पर locate करते हैं? Bilobed neck है, bilobed gland है, and इसकी position जो है that is located in the neck, and it secretes thyroxine and calcitonin. ये क्या secrete करता है? Thyroxine and calcitonin. तो thyroxine जो है that means it controls metabolism of fats, proteins and carbohydrates. Thyroxine जो है वो किस चीज के metabolism को control करता है? Fats, proteins and carbohydrates. And if the malfunctioning of the thyroxine as well as calcitonin in the body, that means it secretes the disease, that is the thyroid in the adults and the cretinism in the children. थायराइड इन ग्लैंड एडल्ट्स का मतलब हो गया कि थायराइड जो है दैट मींस एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, उसमें जो है वो क्या हो जाएगी? एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड. Whereas in case of the cretinism that occurs in the children, it means it retarded growth, retarded the growth. And sometimes it causes the mental retardedness in the children's, and the children are especially mentally, they are mentally abnormal and they are mentally retarded. Our next hormone is the pancreas, and pancreas, it is located below the stomach. The location, the position of the pancreas hormone is below the stomach. ये पे stomach के नीचे होती है इसकी location जो है, and it is the only gland that is endocrine as well as exocrine in function. Pancreas hormone अकेला एक ऐसा हार्मोन है that is behave or function both like as exocrine gland as well as endocrine glands. ये exocrine glands की तरह भी behave करता है और endocrine glands की तरह भी behave करता है. Exocrine glands जो थे they secrete the enzymes, whereas endocrine glands they secrete the hormones. So here pancreas secrete both enzymes as well as hormones. In that way we can say that pancreas behave like exocrine glands as well as endocrine glands, and its endocrine part is known as islets of Langerhans. Islets of Langerhans. That means the endocrine part of the pancreas is known as islets of the Langerhans. Hormones secreted by it are, हार्मोन्स जो है इसमें सिक्रीट होते हैं, दैट इज द इंसुलिन, एंड इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल. इंसुलिन एक ऐसा है बॉडी में जो कि क्या करता है, बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, लोअर करता है. दैट मीन्स दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज इन अवर बॉडी, एंड द ग्लूकोजन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल. ग्लूकोजन जो है वो बॉडी में ब्लड लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ब्लड लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है. इसमें ये इंक्रीज, एंड डेफिशिएंसी ऑफ इट कॉजेस डायबिटीज मेलिटस. तो इंसुलिन जो है एक तरफ से वो लोअर करता है ग्लूकोज लेवल को बॉडी में, और ग्लूकोजन जो होता है वो इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बॉडी में. दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज. इस तरह से बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है दैट मीन्स दैट इज टू बी मेंटेन. पर अगर इनमें से दोनों का जो लेवल है वो इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, दैट मीन्स एट दैट टाइम द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, एंड दैट डिजीज इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस. और इसको हम कॉमन भाषा में कहें दैट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द शुगर. After pancreas, the next gland in our body is the adrenal gland, and it is located on the kidneys. कहाँ पर locate करता है, ये kidneys में locate करता है, and it is secrete adrenaline as well as corticoid hormone, and
this is also known as the emergency hormone, और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी सिक्रीट करता है, दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है दैट मीन्स दे सिक्रीट द न्यूरोट्रांसमीटर इन द previous lecture. After that, the next hormone is the ovaries, and it is the female gonad, and it secretes estrogen. ये क्या secrete करते हैं? Estrogen secrete करते हैं. That is the female sex hormone, and production of egg controls secondary sexual characters in the females, and it also secretes progesterone, and it controls pregnancy, and it also secretes relax, and it helps in the delivery. So this is all about the ovaries, and the last hormone of this chapter is the testes, and it is a female gonad. It secretes testosterone, that is the male sex hormone, and there is the formation of the sperm production, and the formation by the sperms is the formation of the gametes, and also help in developing secondary sexual characters in males. और ये किस चीज में हेल्प करता है? secondary sexual characters जो है वो males में develop करता है, such as beard, mustache, Adam apple, widening of the shoulders, these are the secondary male sex characters that are developed in the males. So this is all about this chapter, that is the control and the coordination, and we have to discuss various aspects with you, such as control and coordination in humans, control and coordination in plants, photoperiodism, various types of the glands that are secreted in our body. So we have to be discussed step by step all these aspects in very detail, and I hope you have to be cleared all the concepts very clearly, and some questions I have to be put in front of you. That is, first question is, what is reflex arc? The total path covered by the reflex action is known as the reflex arc. Name the emergency hormone. That is, the adrenaline is the emergency hormone. And the next question of this topic is, what is synapse? So synapse, that means the junction between the two neurons. The junction between the two neurons, that is known as the synapse, and that distance, that neurons, they are filled with the synaptic fluid or the synaptic cleft.